I must tell you a very brief story how I met श्री गुलाब सिंह जी। चलो क्लास है सुबह 9 बजे से, 9 बजे पहुंच गए क्लास में, 12 बजे क्लास खत्म होगी, लंच लिया, सब चल। आप अपने को एवेल्युएट करते रहिए कि आज मैंने क्या तैयारी किया है, आज मुझे क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, आज मुझसे क्लास में क्या पूछा जाएगा। तो और आप उसको देखिए कि आप उसमें कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। दैट ए टीम ऑफ स्टूडेंट्स अंडर द वेरी एबल लीडरशिप ऑफ श्री गुलाब सिंह जी इज कमिंग टू द नेशनल डिफेंस एकेडमी टू सी द पासिंग आउट परेड। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी मुझे मालूम है कि लखनऊ में एक बहुत ही अग्रणी है, और ना सिर्फ लखनऊ में बल्कि मैं कहूँगा कि एक क्षेत्रीय उत्तर प्रदेश राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड एंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वेरी 17 years of my life in the National Defense Academy that a team of students from the Warriors Defense Academy from Lucknow had come with the students to see how the passing out takes place, what are the students, what they are. I have devoted myself of the last 16 years plus for the cadets, and I can proudly say that whatever best I could have done for my cadets, I have done it. Coming to the level when I say that you should aspire for it, and you have chosen a very right institution, that is the Warriors Defense Academy. आप कभी ये ना सोचिए मैंने 4 घंटे पढ़ लिया, 6 घंटे पढ़ लिया, 8 घंटे पढ़ लिया। स्टडी एंड लर्निंग का कभी कोई एंड नहीं है, ना कोई लाइफ में, ना कोई दिन में, ना कोई कभी समय। इट हैज नेवर एवर एंडिंग प्रोसेस। ईच डे, ईच आवर, ईच मिनट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। टाइम ही आपका इतना बहुमूल्य है जिसको मैं समझता हूँ। जो बच्चा एनडीए में आता है, जब मैं उससे बात करता हूँ, कभी प्रिंसिपल इंटरेक्शन उससे 6 महीने में एक बार होता है, ओनली एंड ओनली थिंग दे टेल कि मैंने पढ़ने का कभी भी टाइम बाउंड नहीं रखा। जब भी समय मिला, दिन हो रात हो, प्रिपेयर करते रहा। इफ इन द क्लास, if you are sitting for 40 minutes, 1 hour, 2 hour, whatever duration of your class is there, whatever is being told to do, to learn, to keep in mind, and whatever things by your learned faculty members, devote yourself, remain physically and mentally present in the class. It doesn't mean that you are physically present but mentally somewhere else. जो borderline students रहते हैं कि कभी किसी students में confidence की कमी है, कभी उसका अपने बात को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, एक्सप्रेशन, हाउ ऑनेस्टली टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो अपनी बात को एक अच्छे से ढंग से रखने की एक कला होनी चाहिए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, रिप्लाई क्या आपका होना चाहिए। जितनी देर में प्रश्न में के बाद पूर्ण विराम लगने जा रहा है, उतनी देर में आपका रिप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए कि व्हाट इज द क्वेश्चन एंड वेयर फ्रॉम आई हैव टू स्टार्ट इन रिप्लाई। जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, सिद्ध ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। माननीय जेपी सिंह जी, आदरणीय श्री गुलाब सिंह जी, और हमारे रेस्पेक्टेड टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स एंड लेफ्टिनेंट ध्रुव and his mother, and the most important of the event today, my dear students, both girls and boys, and the staff of the Defense Academy, Warriors Defense Academy. It's a great pleasure for me this morning to be here in the Warrior Training Academy.
Defence Academy. And I must tell you a very brief story how I met Sri Gulab Singh ji. Just couple of months back, when some of the students of the Warriors Defence Academy had gone to the National Defence Academy to see the passing out parade in the last term only. I was not knowing him, that a team of students under the very able leadership of Sri Gulab Singh ji is coming to the National Defence Academy to see the passing out parade. But on the day of parade, I came to know a team of students from Lucknow has come. And you know that Lucknow is in my blood. Why? Because nearer to this district, that is Unnao, where I am born and brought up. And my education and everything has been completed in Allahabad University. I started my career with the state government as a block development officer from 1992 to 94. And since 94 to 2007, I was in Kanpur University as a professor economics. And since 2008 till date, that means almost 17 years, I am completing in the National Defence Academy. So I was very surprised, and first time in the history of the very 17 years of my life in the National Defence Academy, that a team of students from the Warriors Defence Academy from Lucknow had come with the students to see how the passing out takes place, what are the students, what they are. So it's really a very thoughtful ideas. A visionary person can have this an idea. Because students from Sainik School, Military School, RIMC keeps visiting in different occasions. But academies like Warriors Defence Academy or some other academies had hardly visited. So really, he had a vision in his mind. He has a leadership qualities with himself. That's why the strength of this student, which I am seeing it here today, this morning, and the kind of enthusiasm, the kind of discipline, and the kind of passion which I am seeing among you all is really a very praiseworthy. मैं आप सभी को, मैं यहाँ पर आया हूँ इसके पहले कि मैं कुछ आपको टिप्स दूँ, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता की बात थी जो मैंने गुलाब सिंह के बारे में छोटा सा संक्षिप्त बताया, उसके बाद फिर हमारा नाता जुड़ गया अच्छे से। और कल मैं जब लखनऊ आया तो परसों मेरे इनसे बात हुआ, साधिकार मैंने इनसे कहा, इन्होंने कहा नहीं ठीक है, और बड़ा एक आत्मीयता के भाव से हम दोनों लोग काम कर रहे हैं। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी मुझे मालूम है कि लखनऊ में एक बहुत ही अग्रणी है, और ना सिर्फ लखनऊ में बल्कि मैं कहूँगा कि एक क्षेत्रीय उत्तर प्रदेश राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे सबसे पहले आज आपसे अपनी वार्तालाप के क्रम में कुछ बातें शेयर करनी है। उसके पहले कि मैं कुछ कहूँ, आपको पूर्ण स्वतंत्रता है, फ्रीडम, which is a fundamental right of our constitution for everyone, for each and everyone, to express your desire, to express your queries, to express yourself, whatever you want to ask, clarify, or whatever things you are. I will give ample of time. For students, I always keep myself free anytime, even in the National Defence Academy, wherein for the students we call them as a cadet. I have devoted myself of the last 16 years plus for the cadets, and I can proudly say that whatever best I could have done for my cadets, I have done it. It is not that something special I have done. It was part of my duty. So being a duty-bound person, I have performed best of the best for the cadets. And I keep going here and there, different places. And Lieutenant Dhruv would be knowing that in the armed forces, when they become the officers, after every second years, after 2 years, they keep moving in different places. Command-wise posting and peace posting, sometime the front line posting, different postings takes place. So in different airport, different places, I do not recognize them, but they recognize us.
And the beauty of that is that they come and greet me. When I come to know that he has been my scholar, he has been my student in the National Defence Academy, I also feel happy. And that time I realized that actually this is my true earning of my life. So dear students, it's a very pleasure for me to be here this morning. Once again I am saying to you. But before I come to the crux of this today's ceremony, which is only and only for you, because this Warrior Defence Academy is grooming you for the preparation of the National Defence Academy examination, entrance examination, or CDS examination, Combined Defence Services examination, along with the SSBs. You will also be glad to know that my daughter is also in the Indian Navy. Though I have one son and one daughter, I was aspiring for my son, and I was motivating him that you also join. But sometimes it is the luck and destiny also decides the matter. So my son didn't join it. Rather, I will say that he appeared, but he couldn't qualify. But daughter, in the very first attempt, qualified for the both Indian Army as well as Indian Navy in the JAG branch. And it is the blessings of each and everyone that today she is in the WNC, Western Naval Command, Mumbai. And she joined in 2022, just 2 years she is completing. It is motivating for the girls also, because why I am telling this, that from the last 2 years, the girls' entry in the National Defence Academy has been open. Now girls are also joining in the NDA. You will be knowing it. This is very basic essential. Why? Because across the world, in different parts of the world, the dear defence academies have the entry for the girls also. So here also, the government had taken a very conscious decision to make the entry for the girls. So today, in the Indian Armed Forces, in each branch, whether it is logistic, whether it is infantry, whether it is medical, whether it is education, all the branches of the army means all the three services, Army, Navy and Air Force, are open for the girls. So girls, your motivation level should be very, very high. How's your Josh? Good. Cheers. But coming to the level, when I say that you should aspire for it, and you have chosen a very right institution, that is the Warriors Defence Academy, wherein you will be groomed. As you know that the NDA entrance exam or the CDS entrance exam has a set pattern. It consists of certain subjects. Subjects are also very unique, wherein the mathematics, science, general awareness, English, all these subject experts who are sitting would be telling you that which subject is how much importance to be given, how to prepare for that. The basic niceties of the subject that your professors are competent to tell you. But the most important for all these things is that your commitment, your dedication, your hard work, your passion. These are not the 4 words which I am telling you, but these are the very, very foundation for the preparation of yourselves for the Indian Armed Forces services, and that too for the entry level. आप कितना अधिक परिश्रम कर रहे हैं, कितनी लगन से कर रहे हैं, कितनी तत्परता से कर रहे हैं जाकर के। आप कभी ये न सोचिए मैंने 4 घंटे पढ़ लिया, 6 घंटे पढ़ लिया, 8 घंटे पढ़ लिया। स्टडी एंड लर्निंग का कभी कोई एंड नहीं है, ना कोई लाइफ में, ना कोई दिन में, ना कोई कभी समय। इट हैज नेवर एवर एंडिंग प्रोसेस, इट्स ऑलवेज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन अभी जैसे माननीय जेपी सिंह साहब जी बता रहे थे, आप एक छात्र के रूप में जो आपकी भूमिका है, जो वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में जिस लिए आप बैठे हुए, आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी के लिए बैठे हुए,
समय आपके सीमा में निर्धारित है, समय आप बढ़ा नहीं सकते, सिलेबस भी वेल डिफाइंड है, सिलेबस को आप घटा नहीं सकते। सिलेबस में दक्षता लाने के लिए आपके प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, वो आपको क्लासरूम में जो टीचिंग देते हैं, तैयारी कराते हैं, स्ट्रेटजीज बताते हैं कि कैसे टिपिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जिससे कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर जाए। क्योंकि मैथमेटिक्स जैसे कि है बहुत इंपॉर्टेंट डिटरमिनिंग फैक्टर रहता है जाकर के। इफ योर मैथ्स इज वेरी गुड, द चांसेस ऑफ सक्सेस in the examination becomes 60 to 75% in written examination. SSB part I will come later on. So the written part, in which you all will be knowing that around 4 lakh plus scholars appear in every 6 months, and final entry at the National Defence Academy level, and I will say from the various Defence Academy level, is around 375, because 20 foreign cadets are also taken. So roughly around the estimate is around 400. Every semester people are coming from different places. There is a very tough competition, obviously. When the competition is tough, never be discouraged. Always be ready. Why? Because when my daughter had appeared for a screening test in the Indian Navy, when it was taking place in 2020-21, posts were only 3. And she said to me that it is very difficult for me to crack the exam. I said, why? She said, thousands of students have applied and all those things. The simple story which generally normal student keeps telling. She told me. But I said that how many posts you require actually? You need only 1. There are 3. Still you have to leave 2 posts. So you prepare for the 1 post. You need only 1. Posts are in hundreds. So why you bother? How many are appearing? Forget about them. For just think, चिड़िया जैसे अब जीवी सिंह साहब बता रहे थे कि अर्जुन की आंख, अर्जुन जब वो निशाना कर रहा था तो उसके गुरु ने उससे क्या कहा था कि आप जिस चिड़िया को देख रहे हैं उस चिड़िया को ना देखो, उसकी आंख पे देखो जाकर। अर्जुन की तरह बिल्कुल निशानेबाज रही है जाकर। तो मैंने अपनी डॉटर से कहा कि ओनली 1 पोस्ट इज देयर, यू आर द ओनली 1 कैंडिडेट, सो प्रिपेयर। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, ग्लैड टू नो ऑल्सो दैट शी टॉप ऑल इंडिया लेवल पे, शी गॉट द फर्स्ट पोस्ट। सो कहने का मतलब ये है, सिंपल सा बात है, कभी आप भीड़ तंत्र पे विश्वास न कीजिए। कितना भीड़ है, कितने लोग बैठते हैं, कभी कुछ नहीं। आप सिर्फ जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है, आप अपने को हमेशा इंट्रोस्पेक्ट करते रहिए, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करते रहिए। वेयर यू स्टैंड टुडे, वेयर यू विल स्टैंड टुमारो एंड डे आफ्टर। दिस इंट्रोस्पेक्शन शुड बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपने प्रतिदिन कुछ अपने में वैल्यू एडिशन कर रहे हो, कुछ आपने अच्छा पढ़ा, कुछ नया पढ़ा, कुछ सीखा, कुछ आपने हुनर डेवलप किया प्रतिदिन, नेवर थिंक दैट द एग्जाम इज समटाइम इन द सितंबर और इन द मार्च एंड अप्रैल, सो वी हैव 6 months in hand, actually we can prepare it today, let us enjoy with the friend company and go somewhere else. No, each day, please listen very carefully, this is for my students I am telling, each day, each hour, each minute is very very important for you. टाइम ही आपका इतना बहुमूल्य है जिसको मैं समझता हूँ। जो बच्चा एनडीए में आता है, जब मैं उससे बात करता हूँ, कभी प्रिंसिपल इंटरेक्शन उससे 6 महीने में एक बार होता है, ओनली एंड ओनली थिंग दे टेल कि मैंने पढ़ने का कभी भी टाइम बाउंड नहीं रखा, जब भी समय मिला, दिन हो रात हो, प्रिपेयर करते रहा। So therefore in one line or a very precise way, because I have to listen from you, that's why just in nutshell I am giving you the tip that time is very valuable. और टाइम को अगर करें to groom yourself, to learn yourself. When I say that groom yourself, it means it has some implications, some importance from the SSB point of view. How you are preparing yourself intellectually,
which sometimes we call it as a mentally, how mentally you are alert, and physically also. When you are sitting, what is your posture? That posture also gives weightage or the significance to your intellect, your intellectual level. So your thought process and your bodily posture, both are very important. And if these two components you develop equally in a balanced way, I can give you the guarantee of your success rate to the extent of 80%. अभी 20% बाकी है. 80%. That means, please note it down, if in the class, if you are sitting for 40 minutes, 1 hour, 2 hour, whatever duration of your class is there, whatever is being told to do, to learn, to keep in mind, and whatever things by your learned faculty members, devote yourself, remain physically and mentally present in the class. It doesn't mean that you are physically present but mentally somewhere else. This will not reward you. Always mentally present and give 100% wherever you are. This is one important aspect. And second and last, for the remaining 20%, that means which will give you a guarantee. To the extent of guarantee, I can say only 20%, remaining 20%, because 80% I have told that how do you manage your time, how committed you are for your time, what best you utilize your time, whether in the WDA or at home or in the company of your friends or with the teachers or with your parents, because you have different peer groups all the time in 24 hours. So how rationally, optimally, in the best possible way, you utilize the time you give yourself and take in self. And the second part for the 20%, always be optimistic, be positive, never have any negative ideas, because success in the life comes sometime who are destined. इनके भाग्य में बहुत कुछ लिख के ऊपर से भगवान ने लिख के भेजा हुआ है, प्लेटर पे रहती है सक्सेस. बट समटाइम सक्सेस कम्स विद योर हार्ड वर्क. दैट इज ऑल्सो some of you would be seeing it. And lastly, sometimes the success comes after a very, very great struggle. 3 जगह से सक्सेस मिलती है. कुछ लोग अपने भाग में कहते हैं नहीं, इसके भाग्य में बड़ा भाग्यवान है, प्लेटर पे सक्सेस ले गया है. कुछ लोगों ने थोड़ा मेहनत किया, अपना टाइमली किया, हो गया. और कुछ लोगों को हमेशा स्ट्रगल से सक्सेस मिलती है. ये तीनों फेजेस को मैं लगभग 36 ईयर से टीचिंग प्रोफेशन इधर उधर के जॉब में रहा हूँ. लास्ट 16 साल से तो डिफेंस NDA में ही हूँ. उसके पहले करीब 15-16 साल मैंने स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया. तो 36 साल के कैरियर में मैंने ये तीनों फेजेस अपने देखे हुए जाकर. तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ इन तीनों के संदर्भ में, ऑलवेज बी पॉजिटिव, नेवर हैव एनी नेगेटिव इंप्रेशन, नेगेटिव थॉट इन योर माइंड. क्योंकि कभी आपने कुछ सोचा और कुछ नहीं हुआ, इमीडिएट रिएक्शन माइंड में न रखिए. इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ कि आप में क्या कमी रह गई थी. क्योंकि फेल्योर कभी कभी ये बताती है ना कि आपको 100% पाने के लिए आपकी कमी क्या रह गई थी. अगर आप उसको अपने में देखोगे तो लगेगा कि इस बार हमारा मैथमेटिक्स थोड़ा कमज़ोर था, या फिजिक्स हमारा तैयारी नहीं रहा, या जनरल अवेयरनेस पार्ट, या इंग्लिश पार्ट, या कुछ ना कुछ अपने अंदर कमजोरी जरूर रहती है. अगर आप वास्तविकता से और ईमानदारी से अपने को एवेलुएट करें, और हमेशा अपने को एवेल्युएशन जरूर करते रहना चाहिए. लाइफ में कभी भी एज ए स्टूडेंट यू नेवर लीव योर सेल्फ एज एन ओपन एंडेड कि चलो क्लास है सुबह 9 बजे से, 9 बजे पहुंच गए क्लास में, 12 बजे क्लास खत्म होगी, लंच लिया, सब चल. आप अपने को एवेल्युएट करते रहिए कि आज मैंने क्या तैयारी किया है, आज मुझे क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, आज मुझसे क्लास में क्या पूछा जाएगा. तो और आप उसको देखिए कि आप उसमें कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं.
क्लास में जो पढ़ाया गया ये पहली बार पढ़ाया गया है, या आपको उसके बारे में कुछ आता है कि नहीं आता है, या जो क्लास में पढ़ाया गया वो मेरी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या टीचर ने जो एक्सरसाइज बताई है उस एक्सरसाइज को हम कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं। ये टीचर का छिपा हुआ गुरु मंत्र रहता है। आपको टीचर जो क्लास में बता रहा है वो समझ लो एक आपको मंत्र दे रहा है, वही आपकी सफलता की सीढ़ी में जो है आपका जो है पथ प्रदर्शक बनेगा जाकर के। तो इसलिए हमेशा अपने को एवेल्युएट जरूर करते रहिए। जब एवेल्युएशन की बात करते हैं इसका मतलब होता है सिंपली वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ योर क्रिएटिविटी इन द माइंड। ऑलवेज थिंक इनोवेटिवली, always develop some new style of your thinking, new style of doing, new style of planning, all those things. So therefore, my dear students, what would like to say to summarize myself, because there are so many things to tell you, but you are just budding scholars and warriors of the Warriors Defense Academy and aspiring to join the CDS and the National Defense Academy. From the bottom of my heart, I wish you all the very best for great success in the time to come in these very examination. So work hard, utilize your time very properly, efficiently and optimally. Never waste your time. पैसे से मूल्यवान जो, अगर आज के समय में पैसा तो आपके माता पिता सगे संबंधी जो रहते हैं सबसे मिल जाएगा, समय आपको कभी कोई नहीं देगा। और ये समय आपकी ही सफलता जो है भविष्य में निर्धारित करेगा। इस समय को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने समय को बहुत ही बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से अपने ज्ञानार्जन में और परिश्रम करें। जो एसएसबीज़ की बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती है उसमें आपकी फिजिकल एक्सरसाइजेज भी देखे जाते हैं, उसमें आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है एंड लेवल ऑफ एक्सप्रेशन भी देखा जाता है। यानी आपका व्यक्तित्व जो है, जो एसएसबी के कई इंटरव्यूअर रहते हैं तो उनसे मेरा इंटरेक्शन होता रहता जा करके, उनका आप स्टूडेंट्स के डोजियर्स भी हमारे पास आते रहते हैं जो एसएसबी के बाद। तो उसमें तो खास करके जो देखा जाता है, जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स रहते हैं कि कभी किसी स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस की कमी है, कभी उसका अपने बात को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, एक्सप्रेशन, हाउ ऑनेस्टली टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो अपनी बात को एक अच्छे से ढंग से रखने की एक कला होनी चाहिए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, रिप्लाई क्या आपका होना चाहिए। जितनी देर में प्रश्न में के बाद पूर्ण विराम लगने जा रहा है उतनी देर में आपका रिप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए कि व्हाट इज द क्वेश्चन and where from I have to start in replying this query। क्योंकि जो इंटरव्यूअर बैठा रहता है ना, वो आपकी पर्सनालिटी को देख रहा है कि मेरा क्वेश्चन तो मालूम है इसमें मैं क्या पूछ रहा हूँ, और he also knows that what reply should be there from your side। So therefore always be precise to the question which is being asked। and ये एक अपने में आर्ट है, ये अपने में एक स्किल है। जो स्किल जो है, जो वॉरियर डिफेंस एकेडमी है, ये निश्चित रूप से इस क्षेत्र में आपको बहुत सारे तकनीकी टेक्निक्स, इसके स्किल डेवलपमेंट अप्रोचेज हैं, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स भी इसमें पढ़े हुए जाकर के कि आप अपने एसएसबीज़ के लिए फिजिकल में तो कर ले जाएंगे, जो दौड़ है, जंप है, फलाना है, लेकिन जब फाइनल डे जो आपका चेयरमैन के साथ, प्रेसिडेंट के साथ में जब इंटरव्यू होता है, वो बड़ा फाइनल और डिसाइडिंग होता जा करके। उसके पहले भी इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले चुका होता जा करके। यानी पर्सनालिटी का वो भाग जिसमें आपकी 3 चीज़ें खास करके देखी जाती है। हाउ पॉजिटिव, आपके अंदर कोई डिप्रेसिव काइंड ऑफ आइडियाज़ तो नहीं है कि आपको लगे कि भाई जंगल में जाना है, वो काम करना है, क्योंकि आर्म फोर्सेज इज टोटली ए प्रोफेशन ऑफ एडवेंचर। आई विल नॉट से दैट इज फुल ऑफ रिस्क और समथिंग लाइक दिस। अभी लेफ्टिनेंट जो ध्रुव है जानता होगा बहुत सारी चीज़ें अपना जो है, नई चीज़ें जो आजकल हो रही हैं आर्म फोर्स में। खैर अब तो आजकल टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत आ गई है। आर्म फोर्सेज इन द फ्यूचर इज गोइंग टू बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन। टेक्नोलॉजी इज की टू सक्सेस। तो अभी चूँकि आप लोग स्टूडेंट हैं इसलिए बहुत सारी बातें जो है मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, समय का भी ध्यान रखूँगा। आपका भी समय बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मैं अंत में अपनी बात यहीं समाप्त करूँगा ये कर करके कि मुझे आप लोगों के आँखों में वो जो सपना लेकर के आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं,
और जिस सपने की आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उसको साक्षात और मूर्त रूप देने के लिए मैं इसके लिए यही अंतिम शब्द कहूँगा कि आप अपने धैर्य के साथ कठिन परिश्रम करें और समय का सदुपयोग करते हुए आप तैयारी करें और परीक्षा में बैठें और निश्चित रूप से आप सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद।